uniform pattern that we can see over here. The example is chessboard. So now, each such element in the structure is a chemical substance in case of synthetic fiber. So each such element is known as chemical substance in such synthetic fibers. So I hope you are clear here सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में. तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने जाना सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं. अब हम जानेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स क्या होते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स रीड दिस. Synthetic fibers are made up of a combination of a number of chemical substance. So it is made up of some combination of number of chemical substance, and these units of chemical substance are called polymers. So कुछ combination of chemical substance के द्वारा हमारा synthetic fiber बनता है, and the word and that chemical substance is known as polymer. So synthetic fiber is made up of a chemical substance. You can just write over here. So synthetic fibers are made up of a chemical substance which is known as polymers, जिसको हम क्या कहते हैं, polymers कहते हैं. So you can just write this in your notes because this is helpful for you. So you can write this. Okay, let me enlarge this. So I hope you get it. Synthetic fibers are made up of chemical substance which is known as polymers, and we have learnt about natural fibers, and then we learnt about synthetic fibers, and then we learnt about what are called synthetic fibers. So now चलते हैं हम ग्रेन्यूल की तरफ. अब हम देखेंगे यहाँ पे. So the word polymer is derived from two Greek words named poly meaning many and mer meaning part or a unit. So polymer derive हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, जिसका पहला नाम है poly, जिसका मतलब होता है बहुत सारा, and mer meaning part or a unit. So polymer का मीनिंग आपने जान लिया होगा, तो you can just write in your notes. Polymer is many and mer means it's a part or a unit. Now, types of synthetic fibers. So rayon is a synthetic fiber that I have just told you. Rayon is a synthetic fiber, and there was one more name I have mentioned. So you can just look at this. Nylon and rayon are the synthetic fibers. So in the previous class, you have read that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China. So silk फाइबर जो हमारा obtain होता है वो silk worm से obtain होता है, and this was discovered by China, but the fabric made from the silk fiber turned out to be very costly. So जितने भी fabrics आपके silk के बने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा costly होते हैं. So attempts were made to develop man-made silk from chemical treatment of wood pulp. So there was an attempt, like scientists discovered, like they just wanted to discover something so that they can work on this silk. So what they did, so वो man-made silk बनाना चाहते थे. So by the end of 19th century, scientists discovered a similar fiber obtained from chemical treatment of wood pulp. So उन्होंने
वुड पल्प के ऊपर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जिससे वो क्या बना पाए, रेयन फैब्रिक बना पाए. सो दिस वाज टर्म्ड एज रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. सो आपने रेयन देखा होगा, इट लुक्स लाइक सिल्क बट दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज नॉट अ रियल सिल्क. बिकॉज जो आपका रियल सिल्क है वो आपके सिल्क वॉर्म से obtain होता है एंड दैट इज रियली कॉस्टली. सो यहाँ पे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, एक वुड पल्प के ऊपर उन लोगों ने केमिकल ट्रीटमेंट किया और रेयन को बनाया उन्होंने. और रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क कह सकते हैं. सो इवन दो इट इज obtained from a natural source, it is still a man made because of chemical treatment. So yes, that is like made from wood pulp. So it is natural, but after doing some chemical treatment on that particular wood pulp, we will form a rayon. So that is the reason it is not called as the real one, the real silk. It is known as the artificial silk. So I hope you are clear about rayon. तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, some common application of rayon includes bed sheet, carpets made from mixing rayon with cotton and wool respectively. So आजकल जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं हमें पता होता है कि वो मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कॉटन नहीं है, क्योंकि व्हेन वी गो टू द मार्केट एंड व्हेन वी हंट फॉर अ रियल कॉटन cloths, we will know one thing that cotton cloths are really costly. So क्या होता है यहाँ पे, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जैसे बेडशीट अगर हम खरीदने जाते हैं तो यू मे फाइंड लिटिल बिट shinier side of the bed sheet. That is why we can just why I'm just asking why आप क्यों क्यों दिखता है आपको one part of bed sheet shiny? Because in there they have used rayon and they just mix rayon and cotton to and wool to make bed sheet and carpets. Okay, so here mixing up is going on because cotton is really costly. So what they do is they just make, like they just pick some rayon, some cotton and some wool, and from that they make bed sheets, carpets, etc. Now अब हम चलते हैं नाइलॉन की तरफ. सो नाइलॉन इज फुली synthetic fiber which was made from coal, water and air. So जो आपका नाइलॉन है वो भी सिंथेटिक फाइबर है. इट इज मेड अप ऑफ मैन, it is made up of sorry made up of coal, water and air, and it is man made, I mean to say that. And it is very strong and lustrous and it is used in making parachute. तो आपने रोप्स देखे होंगे, वो एकदम ऐसा लगता है कि प्लास्टिक का बनाया हुआ है. सो वहाँ पे किस किन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होता है, सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल हुआ होता है. रोप्स हो गया, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक नंबर ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स लाइक सॉक्स, कार सीट बेल्ट एक्सेट्रा. सो नाइलॉन से आपके कार के सीट बेल्ट्स बनते हैं, रोप्स बनते हैं, टूथ ब्रशेस बनते हैं. बट इट सीम्स like it is a plastic one, so we like get ourselves confused by looking at it and we just say that कि ये तो प्लास्टिक का है. बट येस, प्लास्टिक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे आजकल के सिनेरियो में. व्हेन वी लाइक यूज सम टूथब्रशेस and silicone are also being used these days. Now let's move on. Now अब हम देखेंगे polyester. So what is polyester? So it is another synthetic fiber that results in wrinkle free. So polyester के कपड़े में आपने ये चीज़ ध्यान में रखी होगी कि मतलब आप कभी भी पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े में लाइक रिंकल्स नहीं आते हैं. देयर इज नो नीड टू आयरन इट. सो आयरन करने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है. तो दैट इज़ द रीज़न polyester is made. So
It's a wrinkle free kind of cloth or fabric, and it is very easy to wash it. एंड आजकल आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा शर्ट्स ड्रेसेस दे आर मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर्स, आजकल काफ़ी कॉमन हो गए हैं. एंड टेरिलीन is also very important polyester which can be drawn into very fine fabrics. So polyesters are used in making bottles, utensils, films and wires. So wires, तो हमें ऐसा लगता है कि पॉलिएस्टर खाली सिर्फ कपड़ों में ही यूज़ होता है, ऐसी बात नहीं. वायर्स में भी यूज़ होता है एंड बॉटल्स में यूज़ होता है. जैसे नायलॉन की वायर आपने देखी होगी, ऐसे वो देखने से तो ऐसे लगती है कि ये तो प्लास्टिक की बनी हुई है, बट इट्स नॉट मेड ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ मेड अप ऑफ नायलॉन पॉलिएस्टर. एंड आपको जस्ट हमने यही पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बनते हैं. सो तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वुड पल्प के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करने की वजह से उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स मिले थे, वो थे नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयन. सो दैट इज द रीजन. नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सिंथेटिक फाइबर के. ओके, सो let's get started with the characteristics of synthetic fibers. So synthetic fibers come with the following characteristics. So synthetic fiber बहुत easily dry up हो जाता है and it is very durable and less expensive. So costly भी नहीं होता है. आपने ज़्यादा ध्यान दिया होगा अगर आप कॉटन के कपड़े खरीदते हैं, नायलॉन के कपड़े खरीदते हैं या फिर पॉलिएस्टर के, तो आपने इनकी कीमतों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा कि कॉटन के कपड़े काफ़ी कॉस्टली होते हैं. एंड व्हेन वी कम टू नो अबाउट द सिल्क वंस, लाइक सिल्क के जो शॉल्स होते हैं, पश्मीना शॉल्स, लाइक दे आर जस्ट मेड फ्रॉम that is a real silk. It's really costly, so like we cannot just like अपने आंखें बंद करके उसे खरीद नहीं सकते. तो मोस्टली देखा जाए तो ज़्यादातर लोग रेयन के कपड़े हो गए, आपके पॉलिएस्टर के कपड़े हो गए एंड नायलॉन के कपड़े हो गए, इन सब का ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं धोने के बाद एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड दे आर ईजिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन. उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिंकल फ्री होती है, जिसमें रिंकल्स नहीं आते. देखिए हमने क्या पढ़ा था, पॉलिएस्टर के बारे में. सो polyester is wrinkle free in that we don't get wrinkles. Now find out from your elders how synthetic fibers are cheap and more durable than natural fibers. So इसके लिए you can just talk to your parents. Your mother will be telling you कि जो natural fibers होते हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं लाइक सिल्क एंड कॉटन, उनका रेट क्या है. एंड सिंथेटिक फाइबर जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं, टेरी कॉटन के कपड़े होते हैं, रेयन के होते हैं, उनका और नेचुरल फाइबर्स का दोनों में क्या अंतर है, वो यू कैन जस्ट गो टू योर पेरेंट्स एंड आस्क देम. दे विल टेल यू अबाउट all these things and they'll tell you about why synthetic fibers are cheap and why natural fibers are costly. So now to find out their effectiveness you can try the following experience. So उनके effectiveness को जानने के लिए हम लोग कुछ नीचे गए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. So you can take two pieces of cloth, one made from natural and the other made from synthetic fiber. So natural in the sense cotton हो गया, नहीं तो silk हो गया. Synthetic in the sense nylon हो गया, rayon हो गया, polyester का कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया. Dip them in a different mugs filled with an equal amount of water for 5 minutes. उन्हें आप पानी में रखिए और उसे 5 मिनट के लिए रखिए एंड उसके बाद take them out of the water and dry them in the sun for a few minutes. पानी से निकाल के सन के नीचे ड्राई कीजिए and you can compare the volume remaining in the mugs for each of them. So आप
जब जैसे ही मतलब कॉटन के कपड़े को निकालेंगे एंड रेयन के कपड़े को या फिर सिंथेटिक फाइबर को निकालेंगे, you can just find the difference of volume of water that is present in the mug. And then you can do this experiment and do let me know in the comment section. So I'm just going to show you some synthetic fibers and explain you. So यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा, so there are number of images. तो चलिए हम नायलॉन का फर्स्ट देखते हैं. So how do a nylon look like? So नायलॉन के जो कपड़े होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं. You can just see over here, and yes, it looks like so. And now we can just move on to the rayon ones. So rayon के जो आपके cloths हो गए, and देखिए, it looks like silk, but that is not a silk. You can see in this diagram, like it looks like silk, but they are not silk. They are artificial silk, and they are usually known as rayon or nylon. Okay, and see here you can do you can see one thing ki it won't get any kind of wrinkles over there. Okay, so चलिए हमने नायलॉन देख लिया. अब हम देखेंगे कॉटन के क्लॉथ्स. सो आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर नोइंग पर्पस कि कॉटन के क्लॉथ्स कैसे दिखते हैं. सो लेट मी ओपन दिस. सो कॉटन के क्लॉथ्स शाइनी कम होते हैं व्हेन कंपेयर टू सिल्क वंस. So these are called the cotton cloths. You can just have a bigger look over here. So these are called cotton cloths, and they look really good, but they are not that shiny when compared to synthetic fibers. So I hope here you understood about synthetic fibers, natural fibers, and we learned about rayons, nylons, we learned about polymers, and we learned about different types of synthetic fibers. So yeah, I hope you liked the session. So if you like the session, just do like my video. And yes, I just need to tell you one thing. You will find, you can just search for Justtutors. So over here you can find worksheets, you can find question and answer solved ones of NCRT, and here we have got free study materials. And if you are from ICSE, if you are from CBSE, and even if you are from IGCSE and US curriculum, if you are following, you can just have a look. Or on this we have textbook solution of maths and science, an exemplar solution for maths and science, and then we have some sort of video lessons also for maths, science, and EVS. And if you want to check your knowledge, you can just tap on this. You can select your required like syllabus, like you're from CBSE or ICSE, IGCSE or US, and then you can test your knowledge on the particular topic. And we have got some worksheet over here, all the worksheets, you can try it on. And we have some courses that are maths, English, and science. So if you are interested, you can just take out some
take the courses. Here you can see chat with us. Here you can chat with us. So there's only you can just click on this and you can chat on this. So yes. So now I'm just going to end my session because it is time up. We will meet up in the next session with the new topics. Till then, bye bye and take care of yourself.